Next is the clause 4.3. This is where you are putting together a scope with your quality management system in the view. So when you set about to write the scope statement, तीन पर्सपेक्टिव है. एक पर्सपेक्टिव, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपको स्कोप में रखना है. You can include all the products or services that you provide, or you can keep some. For example, when I started AIG, we were doing both consulting and training. But for ISO, we decided कि हम कंसल्टिंग के बिजनेस को सर्टिफाई नहीं करेंगे, तो हमारे 9001 के स्कोप में क्या था, सिर्फ ट्रेनिंग. Similarly, you will also mention all your physical offices. Please realize ISO 9001 का ऑडिट हेडकाउंट के बेसिस पे होता है. जितना हेडकाउंट होगा उतने ही नंबर ऑफ ऑडिट डेज होंगे. That maths I will work with you. So if you have multiple locations, you can choose to include all, few, or only one. Completely your discretion. Auditor can't say anything about this. But as part of your scope statement, you must mention what products or services are within the scope of ISO 9001, what physical office locations, you will have to give physical addresses, and just in case you plan to take any exclusion in ISO 9001 can only be taken from clause 8. We'll talk, don't worry, don't panic. Clause 8 के segments में से कुछ portions हम exclusion ले सकते हैं. तो exclusion और उसका justification आपके स्कोप स्टेटमेंट का हिस्सा होता है. आइडियली अभी भी ऑडिटर्स क्वालिटी मैनुअल प्रेफर करते हैं. आईएसओ कहीं डिमांड नहीं करता है क्वालिटी मैनुअल. तो क्वालिटी मैनुअल एक्सटर्नल ऑडिटर बहुत ढूंढेगा. वो कोशिश करेगा कि आपको किसी न किसी तरीके से कन्विंस कर दे that you have to have a quality manual. So ideally, scope should become part of your quality manual. So you will put together a scope statement in which you are making a list of product service, you are providing list of all physical locations, जो office locations हैं जो आप certify करना चाहते हैं, and just in case you've taken any exclusion, you will mention that particular clause and the justification associated with it. Let's read this standard further. The organization shall determine the boundaries and applicability of QMS to establish its scope. When determining this scope, the organization shall consider internal, external issues, requirements of interested parties, products and services. The organization shall apply all the requirements of this international standard if they are applicable within the determined scope of the quality management system. The scope of the organization's QMS shall be available and be maintained as documented information. Scope is a mandatory document. समझ लीजिए, बहुत सिंपल. अगर आईएसओ के ऑडिटर को स्कोप स्टेटमेंट नहीं मिला, ऑडिट नहीं करेगा वो आगे. This is a mandatory document. In fact, I will recommend control find दबाइए और कंट्रोल फाइंड करके लिस्ट बना लीजिए सारे डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स का. यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस इवन वन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. आईएसओ का ऑडिटर बहुत स्ट्रिंजेंट होता है ऑन दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. इट फर्दर गोज ऑन टू से conformity to this international standard may only be claimed if the requirements determined are not applicable, do not affect the organization's ability or responsibility to ensure the conformity of its product and service and the enhancement of customer satisfaction. तो अगर आपने exclusion लिया है, exclusion लेने से
आपके प्रोडक्ट सर्विस डिलीवरी पे कोई असर नहीं होना चाहिए. You must still ensure that you have the ability to produce products as per customer requirement. You must have the ability to deliver as per the law of the land. You must work at enhancing customer satisfaction and improvement of processes. Exclusion लेने के चक्कर में उन पे impact होगा तो external auditor allow नहीं करेगा. That is what pretty much it means. But to make it simple, scope में क्या क्या mention करना है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो आप अपने सर्टिफिकेशन के परव्यू में रखना चाहते हैं, कौन कौन से फिजिकल लोकेशंस आपको स्कोप में रखने हैं, और जस्ट इन केस आपने कोई एक्सक्लूजन लिया है, विथ जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्सक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ योर स्कोप स्टेटमेंट. बहुत मुश्किल है ऑडिटर को कन्विंस करना फॉर एक्सक्लूजन, so please be careful. We'll talk in great detail in